Now we will going to discuss about disease causing microorganism in human. As you know, pathogens are present everywhere. Pathogens I have already discussed that are known as germs or microorganisms which actually affect us, okay, or which are hazardous for us. So they can transfer to our body through air, water and food, okay, whatever the air we are inhaling, whatever the water we are drinking, or whatever the food we are eating, even with the direct contact with the person who is already infected. And when there are two type of diseases, as you know, one is communicable and second is non-communicable. Communicable diseases, when if somebody is infected with that disease, we can get it by shaking hand or through air or through water or through food, okay. So that is called communicable disease. A non-communicable disease which cannot be transferred. Okay, we will discuss like communicable disease like chicken pox. If somebody or influenza, or you can say influenza, that is common cold and all. So in that case, if you see that if one person in the class is having that problem, then you will see around that person most of the student will be having the influenza, or they will catch the common cold. The reason behind that, because it is a communicable disease. That's why it is said that please pay attention, please do the precautions. Even in the eye flu also, if somebody is having eye flu problem, then it is recommended to that boy or girl that stay at home till time you will recover, so that the other students will not affect or infect with that infection. So disease that are transferred from unhealthy or infected person to a healthy person is called communicable disease. But there are few carriers also which can carry the infection and cause the disease, like malaria. Okay, malaria caused by a female anopheles mosquito that act as a carrier. So remember one thing, malaria and dengue are both caused by a female mosquito. The reason behind that, because only the female mosquito has the power, or they need the warm blood, and warm blood from where they will get, from humans or from animals. They need warm blood to deliver the egg, okay. So for that reason only female needs the warm blood. That's why they just bite the humans as well as animal to suck the blood. But the male can take the nutrients from plants and anywhere else. So caused by the female anopheles mosquito that act as a carrier. Same happened with the dengue caused by the female aedes mosquito, okay, and it carry the dengue virus. If it is going to bite any of the person, then that person will affect, and then person will get that virus, and it cause dengue in that person. So now after the carriers, we are having food poisoning. How the food poisoning happen? You must be knowing that sometime if you leave some bread or some eatable item outside home, outside fridge, so after some time, after one day, you will see that it will just smell very bad, or it tastes very bad. So your mother used to tell, or your father used to tell, that don't eat it, it's now ruined. So what has actually happened in that? Actually what happened, at when we have kept it outside the fridge, then what happened, it got the suitable environment, okay. Suitable environment means warmness, it got the warmness, and at that moment the bad bacteria, the bad microorganism grow in that, and when they grow, they just made it poisonous, okay. And that's why whenever this type of thing happens, so it is said that food poisoning, you are having a food poisoning. Whenever you are having a stomach ache or something, stomach related problems, so doctor advise you what you have eaten. The reason behind that, they want to know that whether it is a food poisoning or some other thing. So it happened, food poisoning always happen with the contaminated food. And how the contamination happened? Because of the presence of microorganism, which is also called germs or pathogens, okay. So and remember one thing, food poisoning is that disease which seems to be very fine, matlab it's like okay disease, but it can lead to death also. So don't take it lightly. If you are having any problem related
to stomach, do tell your parents quickly, so that what happen, they can take the measures. Then some common human disease caused by microorganism. We encountered so many disease, even vaccination happen. If you remember, when you were child, you were vaccinated. Okay, even now also, in at the age of 13 or 15, you were vaccinated. Even the polio drops you must have taken. So why these things we are taking? This is happening because, let me tell you, there are diseases, human diseases only, okay, which some are bacterial, some are caused by virus, some are caused by bacteria, some are caused by protozoa, some mode of transfer, some caused by through air, some caused through contact, some caused through water, so mosquito also. So we will going to discuss it. Tuberculosis, like TB we call, TB is caused by bacteria and it caused through air. So, and it is a communicable disease. So remember one thing, the one who got the TB, for some time they have to be stay isolated. Okay, so that they can protect. They will not going to they will not going to transfer their disease to anybody else. Measles virus, it is a virus disease. Okay, it is caused by a virus and it is also a airborne disease. Matlab from air it can it can affect. Then chickenpox, chickenpox is also a viral disease, and it is also mode of transfer is air and contact. Polio is viral disease and it is also caused by air and water. Cholera, bacterial, it is a bacterial disease. Bacteria, it is caused by bacteria. It can, whatever the water you are drinking, whatever the food you are eating, from there you can have this. Typhoid, bacterial disease, again it mode of transfer is water. Hepatitis B is viral disease, again mode of transport is water. Malaria is protozoa and it is caused by whatever, malaria is protozoan disease and it is caused by a carrier called mosquito, name you know. Okay, now if you see these disease can caused by air, by water, by protozoa, by food. So that's why it is said that whenever you are drinking water, it should be boiled or it should be a good one. Okay, it should be a filtered one, so that, or whatever the air we are taking, whenever we are going to some place which is not neat and clean, it is not environment friendly, so don't stay there. If it is stinking there, don't stay there. The reason behind that, see, these are the senses. Okay, we are having senses. When we smell something and it gives the pungent smell or it gives the bad smell, then we should understand that our body doesn't need that type of smell, that environment is not suitable for us, so immediately move from that place. Even the water, if you are drinking, it is not tasting good, so don't drink always boiled water or filtered water. Okay, and the malaria and dengue right now, it's spreading so much, so you need to take care of yourself. Whenever in the evening you are going out for playing or something, do wear full sleeves cloths, or do put some ointment or something, so that it will protect you. Now after this, we are having, after human common diseases, we are having disease causing microorganism in animals. It is not only human that we only get the disease. Animals and plants also do get the disease. Like anthrax is a dangerous disease which cause in human as well as in cattle. It is a cattle disease as well as human disease, and it is caused by a bacterium. Bacterium is a singular. Okay, bacteria से ये फैलती है. Foot and mouth disease of cattle is caused by virus. Okay, there are, if you have cattle at your home, or your parents or somebody relative, so the animals also encountered the foot and mouth disease, which is caused by mainly virus. Disease causing microorganism in plants also get affected by the microorganism. Like disease in plants reduce the yield. What happen when they get disease? जब हम कहते हैं आज फसल ठीक से नहीं आई, yield सही नहीं आई, तो what happen? Actually those microorganism affect the field, the whole field or the crop, and which reduce the production of crop, okay, or yield. So what happen? It gives the loss. What happen?
the farmer will be in loss. So to protect it from microorganism, they spread weedicides or insecticides or so many things so that they can kill those particular microorganism. Example, citrus canker caused by a bacteria. It is a bacteria, rusting of wheat by fungi attack, etc. तो ये सारी diseases, these are the diseases which can cause in plant and affect the yield of the plant. Method of food preservation. Now food poisoning, as I already told you, it is a very big issue, and it doesn't you will not get to know that you are affected by food poisoning, and somewhere it become poisonous inside your body. It will convert into a lots of poison. It will affect your stomach, intestine and other body parts, and it leads to a very dangerous critical position. So now, how to preserve food? Okay, there are number of methods to preserve food. The first method is the chemical method. Chemicals, see, in jams, pickles and so many other things, what we use chemicals to preserve it, because for a long time if you buy a jam and you don't eat, so it is written there ki it 1 year you can use, for 2 years you can use. So how can they write for 2 years, okay, for this much long time duration, how can it can sustain? So that happened because of the chemicals. Chemicals are used to protect the food from the being spoiled, known as preservative, and those chemicals are known as preservative. We add salt एंड एसिड टू पिकल. हम एसिड और सॉल्ट डालते हैं पिकल में, उस क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, जिससे क्या हो, व्हेन वी ऐड सॉल्ट एंड एसिड, तो वो क्या करता है, जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ग्रो होने से रोकता है. एंड व्हेन इट जस्ट stop growing that microorganism, or the microorganism is not able to grow, so इट गेट प्रिजर्व्ड, और आपके पिकल्स जो है वो सालों साल चलते हैं. देन सोडियम बेंजोएट भी यूज़ होता है, आपका पिकल्स में डलता है. इवन जो आपकी ये चटनियाँ आती हैं, ओके, आम की चटनी और ये जो प्रिजर्व्ड आती हैं, इसमें भी आपका सोडियम बेंजोएट डलता है. एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव. ये दीज बोथ आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव which are used for pickles and jams and other stuffs. Preservation by common salts. See, first is chemical method. I have already spoken about it. Now common salt. Common salt is also a preservative used to preserve meat and fish for ages. अगर आपको बहुत लंबे टाइम के लिए, जैसे जो मैराइन लाइफ में रहते हैं, they want to take meat or any of the this type of item with them, so they preserve that item in the salt. The reason behind that, it is not going to spoil. Then meat and fish are covered to check the growth of bacteria. Okay, उसको कवर्ड कर दिया जाता है सॉल्ट से, जिससे क्या हो, बैक्टीरिया ग्रो ही ना कर पाए. It is also used to preserve amla. Salt is also used in amla, to preserve amla, raw mangoes and tamarind, your imli. Okay, so for these all things, tamarind, ठीक है, for these all things we use salt as a preservative, and in the pickles also we use salt as a preservative. In other things also we use salt as a preservative. Then preservation by sugar also play a preservative role, like in jam, jelly, squash. It is used for preserving these things. Then sugar reduce the moisture content which inhibit the growth of bacteria. And what sugar do? Sugar same, the salt is also reducing the growth of microorganisms, and in the same way sugar is also reducing the growth of microorganism, which save our food for spoiling. Okay, now preservation by oil and vinegar. See, in oil, or sometime it happen, I have seen my mother, what she used to do whenever there is any type of lots of amount of this dal, black dal come, or any pea come. So what she used to do, chicken pea come, so what she used to do, she put some sarson ka tel or any kind of tel, and she just put few drops and she mix in that dal container. Why with the dal? Why? Because the oil will going to preserve it. Okay, in rainy season what happen, that parasites come and they eat all the dal. So what she used to do, she just preserve it with the help of the oil. So oil is used, even the vinegar is used for the preservation. Like oil and vinegar create unfavorable condition for the growth of microorganism. They don't give that favorable condition to grow, so microorganisms are not able to grow. It is used to preserve fish, fruit, pickles and meat. Now heat and cold treatment.
Heat and cold also play a very important role in the growth of microorganism. Okay, when you provide heat or see, every microorganism are not same. Okay, they are very different from each other. So some require more heat to grow, some require less heat to grow, some require cold environment to grow. It is if I will say that microorganisms are present all over the world, all over the things, then it is absolutely right. Whether it is a ice cold environment or whether it is a summer, a bad summer, okay, a hot environment, they can live in any of the situation if that situation is suitable for them. So both higher and lower temperature prevent the growth of microorganism. So it prevent also, see, maximum time that cold temperature or hotness prevent the growth also. See, it is suitable for few microorganism and it prevent also. Prevent means उनको grow करने से रोकता है. Like if you have seen, as soon as the that milkman come at your home and he give milk, your mother used to boil it. ओके वो कहती भी होंगी पर सबसे पहले बॉईल कर दो, नहीं तो खराब हो जाएगा दूध. तो द रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि जब आपका मिल्क मैन दूध लेके आता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसको स्पॉइल कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं. तो जब आप उसको कुछ सेकंड्स के लिए गर्म करते हो या उसको प्रॉपरली गर्म एक उबाल आने देते हो, आप गर्म कर लेते हो, तो जो those microorganism, they die or they just stop the growth of those microorganism. It stop the growth of those microorganism which protect your milk, okay, which protect your milk, and this process is known as pasteurization. ये आपका इंडस्ट्रीज में भी जो भी आपके ये पैकेट्स में बंद दूध होते हैं उसमें भी सेम प्रोसेस यूज़ किया जाता है. बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उसमें हीट प्रोवाइड की जाती है सो दैट द हीट विल किल और reduce the growth of the microorganism and the milk will sustain for a longer time. Pasteurization, as it is written, heating of food to high temperature or milk, it can be milk also, and then suddenly chilled और उसके बाद एकदम से ठंडा करना and store is called pasteurization. This process is known as pasteurization. It is done to kill and control the growth of bacteria. तो हम भी रोज़ पेस्चराइजेशन करते हैं एट आवर होम व्हेन वी बॉयल द मिल्क फॉर द फर्स्ट टाइम. That is also called the pasteurization. Next is nitrogen fixation. As I already told you that microorganisms play a very important role in the growth of plants because they give the nitrogen to them. Now let me tell you what is first you should know that, see, in our environment nitrogen, argon, oxygen, all the gases are mixed. Okay, in air so many gases are there. Now the question comes that plant take carbon dioxide and take out oxygen, but why they cannot take the nitrogen? ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में हम कोई भी चीज़ खाते हैं, ठीक है, हम प्रोटीन ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दाल, हम विटामिन ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, तो वो जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं हो जाते. ठीक है, इट ट्रांसफॉर्म इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड देन दे आर absorbed by our body. In the same way, nitrogen is very complex for a plant. ठीक है, प्लांट के लिए उसको एब्जॉर्ब करना इट इज़ वेरी वेरी hard for them. So what happen, they can only absorb the form of nitrogen which is called nitrate or nitrite. They can only absorb nitrate और nitrite. अब नाइट्रोजन को जो एयर में प्रेजेंट है उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करना वो कौन करेगा, जिससे प्लांट नाइट्रेट और नाइट्राइट को ले सके एंड दे कैन ग्रो इजीली और वो अच्छा ईल्ड दे सके. ऐसा कौन करेगा? तो उसके लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दैट ओनली वी आर गोइंग टू टॉक. सी, इन लेग्यूमिनस प्लांट देयर आर लेग्यूमिनस प्लांट इन क्रॉप प्रोडक्शन. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट लेग्यूमिनस प्लांट. उनके नोट्स में देर इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड राइबोजियम. राइबोजियम होता है, ठीक है, उसका नाम राइबोजियम होता है एंड इट हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. वो क्या करता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में. सो इट इज़ वेरी गुड, ओके, बिकॉज इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू नाइट्रेट एंड द प्लांट इज able to take that nitrate. Sometimes nitrogen get fixed through the action of lightning. Now
and the thundering and lightning happen. Due to that lightning also, the nitrogen present in our air, it convert into nitrate or nitrite. So that is also a nitrogen fixation, because that nitrate is taken by the plant again. Same, what is nitrogen cycle? Up it is very important that the nitrate, it is very important that the nitrate which is present, which is plant is taking, how it is coming to environment again, air again, or the nitrogen. ऐसे तो अगर नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रही है और प्लांट दे आर यूजिंग इट, तो वो तो खत्म हो जानी चाहिए एक दिन. ओके, वन डे विल कम दैट एवरीथिंग विल फिनिश्ड, ऑल द नाइट्रोजन विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट और नाइट्राइट एंड एवरीथिंग विल फिनिश. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. ओके, हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन इज देयर, 78% नाइट्रोजन इज देयर इन एयर, ओके, अराउंड अस. नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन. इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, क्लोरोफिल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है एंड विटामिन. ठीक है. अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट, और ये 78% ही रहता है. एंड हाउ दिस इज हैपनिंग? It is happening because of the nitrogen cycle that we are going to discuss right now. Okay, let's see the process of nitrogen cycle. Okay, for that process, if you see, nitrogen already present in atmosphere. ठीक है. बैक्टीरिया लाइक कैसे, किस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है? बहुत सारे फॉर्म में एयर में प्रेजेंट है. बैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन करता है. वो क्या करता है? नाइट्रोजन देता है सॉइल को. ठीक है. इट कन्वर्ट into nitrate, then from atmospheric nitrogen in the soil, I told you lightning के through होता है, from animal get protein. अब now see this picture properly. Okay, I am just zooming it little bit. Okay, first if you see the first line, nitrogen, that is N2. It always exists in N2 form, not N, remember. Okay, ये exist ही stable form इसकी N2 है. तो नाइट्रोजन को देखो N2 in atmosphere, ये आपकी एयर में है. ठीक है. Now what is happening? Just see the arrow which is shown here. Arrow जा रहा है. अब क्या हो रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, एरो गया. फर्स्ट एरो देखो. ओके, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जहाँ प्लांट लगा हुआ है. इफ़ यू सी अ ट्री, देयर यू विल फाइंड एट द बॉटम फर्स्ट एरो, पहला एरो देखो, उसमें लिखा हुआ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन रूट्स नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. दिस इज अ प्लांट विच इज अ लेग्यूमिनस प्लांट, एंड विच बैक्टीरिया इज देयर? राइबोजियम. राइबोजियम बैक्टीरिया इज देयर विच इज फिक्सिंग व्हाट? Nitrogen into nitrate. It is converting nitrogen into nitrate to do the nitrogen fixation process. Then if you see the second arrow, that same atmospheric nitrogen fixing bacteria in soil में भी present होंगे कुछ बैक्टीरिया जो कि फिर दोबारा उस नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? अमोनियम में. It is converting into ammonium, that is NH4 negative. It is a ion. Okay, ion are having charges plus or negative. Then अमोनियम में कन्वर्ट करता है. देन अभी हम पहली साइकिल देख रहे हैं. ठीक है. देन गो उस अमोनियम के आगे वाला एरो देखो. फिर अमोनियम किस में कन्वर्ट होता है? अगेन नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, NO3 नेगेटिव. एंड देन प्लांट्स आर टेकिंग. ओके, नाइट्रेट, उस नाइट्रेट को प्लांट्स देख रहे हैं, टेक कर रहे हैं. नाउ अब आती है बात रैबिट. यू मस्ट बी सीइंग द रैबिट. ठीक है. अमोनियो एसिड एंड द प्रोटीन इन प्लांट एंड एनिमल. अब क्या है? प्लांट डिग्रेड होंगे, एनिमल्स डिग्रेड होंगे, उनके अंदर डिग्रेड मीन्स मरेंगे. ठीक है. इफ़ दे विल डिके, डेड एंड डिके जो होते हैं, तो जो वो डिकम्पोज होंगे तो उनके अंदर भी तो नाइट्रोजन होगा. ठीक है. हमारे अंदर भी नाइट्रोजन है, तो वो क्या होगा? सॉइल के साथ मिलेगा, तो वो क्या बनेंगे? डेंट्रिटस. ठीक है. डेंट्रिटस में कन्वर्ट होगा, एंड देन डेंट्रीट्रिवोर में कन्वर्ट होगा, जो कि आपका सॉइल में मिक्स हो जाएगा, और फिर डिकम्पोजिशन होके वो दोबारा से अमोनियम बनाएगा, और फिर अमोनियम नाइट्रोजन फिक्सेशन से फिर दोबारा प्लांट में जाएगा. ठीक है. तो इतना लंबा आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट see the NCERT one, that is the simplest one, and you can learn only the simple arrow. After that you can see the same process is happening. So what is actually happening कि हमारे अंदर जो नाइट्रोजन है या प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन है, जो वो डेड और डिके होता है, या हम भी जो प्लांट खा रहे हैं, वॉट एवर द फूड वी आर टेकिंग, दैट ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन, एंड एट द एंड वॉट एवर वी आर एक्सक्रीटिंग इट कंटेन नाइट्रोजन. उसमें भी नाइट्रोजन निकल रहा है. तो ये सारी चीज़ें, जब ये नाइट्रोजन जा रहा है, आ रहा है, तो ये दे आर अल्टीमेटली डिकम्पोजिंग इन द सॉइल.
okay, and they are mixing in soil, and when they are mixing in soil, they converting that nitrogen into nitrate, and the plant are able to take that nitrate, and the plant can grow easily, and we will get a good yield. So this is called the nitrogen fixation cycle, and it is really important in respect of your this class, so please go through it. So now your chapter is finished, but I want to talk about one thing which is very important topic, that is your the very important topic is your this vaccine. Okay, what are vaccine, how vaccine work? This question comes in our mind, that how vaccine works. Actually what happened, you must have heard that if somebody got infected with चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स, तो उनको दोबारा से वो नहीं होता, ठीक है, चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स. व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों ऐसा क्यों होता है कि दोबारा उनको नहीं होता? अब लिसन केयरफुली. एक्चुअली व्हाट हैपन, हमारे साथ हमारी बॉडी में जैसे कोई डिज़ीज़ आती है, डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट होती है, हमारा इम्यूनिटी इतनी स्मार्ट होती है कि वो सोल्जर्स बनाने लग जाती है, ठीक है. अब हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हर एक अलग वाइट ब्लड सेल्स हैं या अलग सोल्जर्स हैं, ठीक है. तो अगर टीबी के वायरस आया तो उसके लिए अलग सोल्जर्स है, अगर कॉलरा का आया तो उसके लिए अलग है, अगर चिकन पॉक्स का आया तो उसके लिए अलग है. तो अब व्हाट हैपन कि हमारी बॉडी में वो सोल्जर्स आ गए, ठीक है. अब नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास, अब मान लो उस टाइम पे उन्होंने सोल्जर प्रोड्यूस हुए, सोल्जर लाइक आई एम गिविंग एन एग्जांपल, 100 सोल्जर प्रोड्यूस करे हमारी बॉडी ने. अब 100 सोल्जर जब प्रोड्यूस कर दिए हमारी बॉडी ने, पर उनमें से यूज़ कितने हुए? ओनली 20 यूज़ हुए, अभी भी 80 बच गए. तो 80 अब क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो हमारी बॉडी में कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं. अब कभी भी अगर वो वायरस या वो बैक्टीरिया हमारी या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आएगा, तो हमारी बॉडी को फटाफट पता चल जाएगा, वो फटाफट जान लेगी कि ओके दिस वन इज़ दैट बैक्टीरिया और दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो इसके लिए हमें वही सोल्जर जो हमने 80 सोल्जर्स बचे हुए उनको भेज देते हैं, और वो फटाफट उनको जाके किल कर देगा. जब तक वो बढ़ेंगे उससे पहले ही हमारे 80 सोल्जर्स जाके किल कर देंगे. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ वैक्सीन. वैक्सीन व्हाट हैपन, वैक्सीन में आपके वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जर्म्स होते हैं, वीक जर्म्स होते हैं, वीक पैथोजेंस होते हैं, जो आपने देखा होगा बचपन से आपको वैक्सीन लगाई जाती है. बचपन से वैक्सीन लगाने का मतलब ही ये होता है, व्हेन दे पुट द वैक्सीन, तो क्या होता है, आप उन्होंने वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में भेज दिए, तो आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड में क्या किया, सोल्जर्स बना दिए, ठीक है. मान लो 100 बना दिया, अब वो तो बहुत वीक है, उनके लिए 10 सोल्जर्स यूज़ हुए, 90 आपके क्या हो गई, बॉडी ने स्टोर कर लिए. मान लो जब आप बड़े हुए या आफ्टर 1-2 ईयर्स बाद आपको वो इन्फेक्शन दोबारा हो गया, आपको वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा आ गए, तो वो जो आपके 90 सोल्जर्स हैं जो बचे हुए हैं, वो वर्क करेंगे फटाफट, और वो उनको फटाफट मार देंगे, वो उनको डेवलप्ड ही नहीं होने देंगे, वो उनको स्ट्रॉन्ग ही नहीं होने देंगे. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीन. एक्चुअली वैक्सीन इज़ नॉट अ मेडिसिन, इट जस्ट गिव राइज द एंटी बॉडीज़ इनसाइड आर सेल. हम उनको क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़. हमारी बॉडी में वो जो सोल्जर्स, वो जो वाइट ब्लड सेल्स वर्क कर रहे हैं, उनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं. तो वैक्सीन हेल्प करती है हमारी एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड में बनाती है, और विच इज़ सेव्ड फॉर द फर्दर यूज़. Okay, so this is a very good thing to know that what is the actually वर्क ऑफ वैक्सीन. सब सोचते हैं वैक्सीन में दवाई होती है, पर वैक्सीन में कोई दवाई नहीं होती. वैक्सीन कंटेन द वीक पैथोजन और जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट दे आर सो वीक दैट दे आर नॉट एबल टू हार्म अस. बट इन रिस्पॉन्ड आर बॉडी मेक एंटीबॉडीज. ओके, एंटीबॉडीज बना देती है विच प्रोटेक्ट अस लेटर ऑन इफ वी गेट दैट डिजीज. ओके, सो दिस इज दैट्स वाई अगर एक को चिकन पॉक्स हो गया, अब लेट्स गिव एन एग्जांपल, लाइक इफ़ आई गॉट स्मॉल पॉक्स, मेरे बचपन में मुझे स्मॉल पॉक्स हो गया, तो मेरी बॉडी ने वो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बना के रख ली, ठीक है. अब उसमें से 80 यूज़ हो गई, 20 या 30-40 मिलियंस, वैसे तो मिलियंस एंटीबॉडीज़ यूज़ होती हैं, ठीक है, उनमें से कुछ बच गई. तो अब जैसे ही वो वायरस दोबारा से मेरी बॉडी में आएगा, मेरी बॉडी समझ जाएगी कि इसके लिए तो वही सोल्जर्स भेजने हैं मुझे, तो वही सोल्जर्स भेजेंगे, और वो जब तक बढ़ेगा
मेरी बॉडी में, वो जब तक ग्रो करेंगे तब तक वो उन्हें किल कर देंगे, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगता है। अगर कोई नया वायरस, नई चीज़ आ रही है तो आपकी बॉडी को एंटीबॉडीज़ बनाने में टाइम लगता है, बट अगर वो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो वो फटाफट वर्क करेंगी और दे विल किल द वायरस और बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट दैट मोमेंट ओनली. So this is how the vaccine work. So I hope you all have understood this chapter. Go through it from NCERT once, read it carefully.